So good morning, guys. Now we are going to first see the Bangla Sahib Gurudwara, Sikh temple, and then we go to Mandava. Okay. Hello. Now we are at Bangla Sahib Gurudwara. First, we are going to see the mega kitchen here. We have to go over there. Then after we are inside the Darbar Hall. Then we start drive to here, Mandava, Rajasthan. This is the Langar Hall. The people on the lunch time, evening time, for dinner time, just not for this Gurudwara committee. All over the world Gurudwaras, they provide the free food like that. Every day, people are come, eat, gone. Come, eat, gone. Anyone want to give anything for ourselves? As you like. Otherwise, they are not demanding for anything. This way is for the kitchen. How can they prepare? Here are the many devotees, spiritual people. So they have all kind of stock. Own stock they have. Gurdwara committee have everything. So they provide everything, food, tea, whatever they make, they provide everything. Quality is, see, the all people, rich, poor, all are the same. They have to come here, sit like that kind of, then they have to eat. Yes, absolutely. Here is the volunteers as well. For ourselves, they are preparing the food. Also, they serve the food. These guys are serving. Come here, I will show you. The bread, roti, and they're like a spoon something. They have the plates. Some another guy have a vegetable, and they are make inside the kitchen. This is for the langar dal, lentika, and there are rotis inside the kitchen. They can make everything over there. The plates is, yes, why not? You can use video, you can use pictures, whatever you want to take, you can take, no problem. Listening about for any country there are no Gurdwara. The people are also who have no money. They are come to stay there. One guy is the name of Varun Vagish. He is also the YouTuber. He do the hitchhiking. You understand hitchhiking? Lift. He will travel with the lift. He don't want to spend the money. So very short time he will spend the money. He always use the hitchhiking, and he mostly time when they are in outside of India, they are staying in Gurudwara. See, look. They are preparing here the bread, chapati, roti. Here is ready for the rice. Nowadays, they have the electronic machine. Things they have to make with the machine. Before some time, they can make with the hand. See, this is full with the vegetable. This one is the machine made the chapatis. Here they will be put the flour. That side the bread is ready and come to down there. See, look.
The bread is come here. Here they can prepare the dough to make the chapati. Here the ladies, they put the butter on a chapati. Butter, ghee. Yes. This section for the dishwasher. Here everything they have to clean and putting there. This is the dishwasher machine. See? More than 10 to 20,000 people are eating every day. And if the Sikh religion have some kind of festival like Guru Parv, on the time more than like 100,000 people, 200,000 people. Free food for everyone. In the lunch time, here the people are in the waiting. This is the blessed water. On the time of festival, the people are come here to do bathing first. Sikh religion, any religion people are come, they are not different to anyone. The Islamic people, you not allowed to come here. You are Hindu religion people not allowed to come here. No, they don't have the difference for anything. No casteism in the temple. Okay. No casteism. Everything are similar. What we call, 5 fingers are not similar. Yes. But when you try to eat, yesterday you eat with the roti, bread. Yes. So when you took the bread like that, so it's come to similar. So like that. So this is the blessed water. See, the people are the Sikh people. They turban, wearing turban, this color of turban, orange color. They are bathing there. Yesterday I am telling you I will be show you a special thing inside. Very special. That's why. We are not leaving here without see this. Yes, you have to take a picture here, not allow the pictures is over there. Look at here. This is the best view inside the Darbar Hall. बंगला साहिब गुरुद्वारा सिख टेम्पल, न्यू दिल्ली। गुरुद्वारा बंगला साहिब के दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। वहाँ से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं मंडावा राजस्थान। मिलते हैं बीच में कहीं। आज तो दिल्ली में पूरे में बारिश ही बारिश है। Too much rain start in the morning. Right now at Dhola Kuan in Delhi, and rain are not stopping. पहुंच गए हैं झुंझुनू. This city name is Junjunu. Yes. आधा घंटा और लगेगा, ऑलमोस्ट लाइक हाफ आवर हियर टू इन मंडावा। और मंडावा आप सभी लोग नहीं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि मंडावा क्या है। मंडावा एक राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गांव है। आई एक्सप्लेन दैम। मंडावा इज लाइक ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान नियर द झुंझुनू। सो विलेज मंडावा विलेज इज पॉपुलर टू थोड़ा सा यार दोस्तों गला खराब है, तबीयत खराब होने की वजह से ना। मंडावा इज पॉपुलर टू दे हैव ओन हेरिटेज हवेलीज, ओल्ड प्रॉपर्टीज। सो व्हेन वी आर देयर वी विल शो यू, नो प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है यहाँ से।
काफ़ी ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, सुबह से बारिश हुई है। कुछ दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये देखो मेरा दोस्त सो रहा है, ही स्लीपिंग। ओहो टायर्ड, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, सॉरी गुड इवनिंग। We are very near to Mandava. Within 15 to 20 minutes, less than that, we arrived at the hotel in Mandava. Thank you. You're welcome. देखा दोस्तों, ऐसा होता है, सोते सोते भी हल्की सी एक What are you called to nap? Nap? Siesta. Siesta. Small siesta. Small siesta उसने ले लिया, एक छोटी सी नींद ले लिया हल्की सी। Just after the dinner. After the dinner? No, After lunch. After the tea. But the people are drinking the tea for the wake up. And it is opposite to you. You drink the tea and after you have to sleep. It means like you sleep. we have all the hours changed. पेट्रोल पंप पे रुके हैं दोस्तों। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, फीवर है बहुत तेज। रास्ते में आते हुए रुके थे एक जगह पे, तो टैक्स कटवाने के लिए जस्ट टैक्स कटवाया था वहाँ पे राजस्थान का, ऑलमोस्ट 1970 रुपये का कटा है 11 दिन का, छोटी गाड़ी के लिए, कमर्शियल टैक्सी के लिए। और काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, बारिश रुक ही नहीं रही है, बारिश रेगुलर पड़ रही है। रास्ते में दारूहेड़ा में तो बहुत ही ज़्यादा जाम था। अभी आगे रुकते हैं कहीं पे जा कर के चाय कॉफ़ी के लिए, फिर देखते हैं। टैबलेट ली है, रिवाड़ी रुका था, टैबलेट ले ली थी वहाँ से, डोलो 650। चाय पीते हैं, कहीं पे रुकते हैं यहाँ से निकल कर के। Hello, Gaurav. You didn't came, but now we are in Bikaner, inside a temple. It's beautiful. They told us that there is stone painted, and there are other parts that are wooden made. It's amazing. They opened the doors for us, and very, very beautiful. Now we are watching the Havelis in Bikaner. They are very different from the ones from Mandawa, but they are very nice too. Here I think they are all closed, but beautiful. कि जब लोग आपस में भाषा वाले मिल जाते हैं तो तीसरा ना ऐसे ही खड़ा रहता है चुपचाप, hamaरे जैसा। Tomar aquí beber palte con masala. Vale, beber, después maletas, vamos dentro, después venga cerca de la puerta del hotel y esperar aquí, después vamos un poco vuelta, ¿vale? Ahí está muy bien. तो ये डिसाइड हुआ है कि आज ही साइट सीइंग करा लेंगे, कल थोड़ा सा घूम लेंगे। वॉकिंग टूर है यहाँ पे और कुछ नहीं है उसके अलावा। बाकी कल सुबह निकलते हैं बीकानेर के लिए साइट सीइंग के बाद। ये हैं यहाँ के मालिक, हमारे दोस्त हैं, ये हमारे मित्र हैं, राधिका हवेली के ऑनर हैं। तो भाई पहुँच गए हैं मंडावा, ये है राधिका हवेली। कौन से नंबर दिया अंकल रूम उनको? रूम दिखा रहे हैं, बुक कर रखा होगा ना उनका तो ऑलरेडी। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। तो दोस्तों ये है राधिका हवेली मंडावा में। इसी तरह की हवेलियां हैं यहाँ पे, यही हैं देखने के लिए। इसमें कोई है रूम में? ये रूम है यहाँ पर अंदर, होटल है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ये होटल है।
ये वॉशरूम है, मंडावा के अंदर है ये प्रॉपर्टी, राधिका हवेली। और ये हैं हमारे गाइड साहब जो गेस्ट को घुमा के लेके आएंगे, नमस्ते। कृष्णा जी। और ये देखो ये दोनों कहाँ खड़े हैं। चाओ।